welcome. You're watching The Big Story. I'm Afrida Rahman Ali. Let's now focus on the Munger incident where multiple versions have come up. We first had the police reaction coming from the district police of Munger. Then we had some eyewitnesses and protesters countering those claims and talking about this incident as a case of police high-handedness. And then, of course, now again, CISF has come up with yet another report with the exact sequence of events. Now, after this, what we have seen now is a political war of words that has flared up over the violent clashes in Munger. Opposition has launched a scathing attack on Chief Minister Nitish Kumar, while LJP Chief Chirag Paswan called the Chief Minister casteist. Sena MP Sanjay Raut is now asking why the BJP is not raising questions and added that if this was an opposition state, they would have asked for president's rule probably by now. So that is the Sena allegation that BJP is not making enough noise about this incident. Congress delegation who met Bihar governor for a detailed inquiry have also demanded resignation of the CM and Deputy CM. Meanwhile, jumping into the fray is BJP MP Manoj Tiwari, who's saying that there is a conspiracy behind this entire incident. So that's the level of claims and counterclaims and multiple versions coming in, and also some very scathing reactions to this incident. I want to go across to the panelists joining me here on Mirror Now this afternoon. Dr. Ajay Pandey, spokesperson of the Lok Janshakti Party. Also Kamal Nopani, spokesperson of the JDU, joining me shortly. Let me first go across to Dr. Ajay Pandey, who's the national spokesperson of the LJP. Dr. Pandey, first of all, good afternoon and thanks for joining us. I want to ask you that here is a question of a young man losing his life in a firing incident. Of course, he died out of gunshot injuries. Is it appropriate to play politics over this incident? Your leader, Chirag Paswan, has made some very strong remarks, calling Nitish Kumar a casteist, drawing references to the Jallianwala Bagh. But I want to ask you, isn't this simply fishing in troubled waters? Aren't you not more concerned about the plight of the youth, the safety of the youth, which has now come under question after jobs and unemployment and the state of education? We are now questioning the basic safety of the citizen. No, you are absolutely correct. Chirag Paswan is compelled to make such a strong reaction. And to understand this, you have to understand the background. 3 years ago, Chirag Paswan was visiting the home district of Chief Minister Nitish Kumar, Nalanda. And there the people complained about law and order. They complained about number 100 not working in Bihar, which was part of the Sat Nishchay of Chief Minister. So my president was appalled with the sorrow and with the troubles the people were facing. And we raised this question and we wanted to meet the Chief Minister. He had no time because he and his police was busy in smuggling liquors and making the home delivery of liquors. So that was his priority. And we were saying again and again that Bihar is sitting on a bomb and the bomb was to explode. It is very deplorable because it is just not the killing of one person. It is the sentiment of people of Bihar, the devotees of Goddess Durga. We talk about, he was talking all these years, 15 years about women empowerment, giving bicycle and 50,000 to the girls students graduating. And on that very day of Ashtami, on this puja, on this very auspicious day, this is the treatment he gives to the people of Bihar. So it is not about fishing in the trouble award. We are appalled. We have no words to condemn this. We are as sorry as you and the entire No, but what nation. exactly are you blaming Nitish Kumar for? Because you are training your guns against the Chief Minister. The Election Commission has removed the SP and the DM. Before you answer that, in fact, let's also try and listen in once to the inputs that we have. And I'm going to come across to you. If we can quickly listen into the kind of reactions that we are talking about. And we have reactions from all the major political parties, except, of course, Nitish Kumar has not spoken up. But we have Randeep Surjewala and other leaders of the LJP, including Chirag Paswan, speaking up on this matter. Let's see if we can listen into some of it. जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की बनती है। भाई पता करें ना कि किसके निर्देश पर गोलियां चली हैं। किसी ने तो आदेश दिए होंगे, किसी की तरफ तो बिना आदेश के, बिना निर्देशों के गोली तो नहीं चलेगी।
तो किसने ये आदेश दिए गोली चलाने के? वहाँ पे डीएम साहिबा को किसने ये जानकारी दी? किसने कहा कि भैया आप दुर्गा भक्तों के ऊपर आप गोली चला दीजिए? तो किसी की तरफ से तो क्या ही होगा ना। मुख्यमंत्री की खुद की सोच इतनी जातिवादी हो तो उससे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये मानता हूँ कि हिंदुत्व के ऊपर हमला है। इस प्रकार से अगर दुर्गा माता के जुलूस पर हमला महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में होता तो मुझे पूरा विश्वास है वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के सभी बीजेपी के हमारे जो पॉलिटिकल जो नेता है, राजकीय नेता है, वो सभी ने सबसे पहले वो मांग करते थे कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, सरकार को बर्खास्त करो, और ये सरकार हिंदुत्व विरोधी है। तो अगर मुंगेर में इस प्रकार से हमला होता है जहाँ बीजेपी की भी सरकार है तो क्या हिंदुत्व का विरोध नहीं है? ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है। हमने महामहिम राज्यपाल जी को कहा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें फौरन बर्खास्त किया जाए। दूसरा, अनुराग कुमार के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तीसरा, जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और एक निष्पक्ष इंक्वायरी की जाए। देखो, सजा भी हुई है अधिकारियों को और आगे इसकी जांच करा करके मुंगेर की घटना में जो भी दोषी होंगे, हमें कई बार इसमें साजिश की भी बू आ रही है, तो सभी जांच करके निष्पक्ष और जो दोषी होगा उसको बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। All right, कमल नोपानी of the JDU also with us. नोपानी जी, आपने सुना ऑपोजिशन के नेताओं का क्या कहना है। मैं आपसे सिंपल ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अभी तक तो हम कह रहे थे बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है, युवाओं के लिए जो है नौकरियां नहीं है, लेकिन अब तो युवा इस तरह के पुलिस फायरिंग में मरने लगे हैं, विच मीन्स बेसिक सेफ्टी और प्रोटेक्शन टू पीपल ऑन अ डे ऑफ आइडल इमर्शन इतना भी नहीं अगर हो सका एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ऑपोजिशन नेता गलत है अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठा रहे हैं? बिकॉज दिस इज गोइंग टू डेंट द इमेज ऑफ सुशासन बाबू. इट इज अ ह्यूज ब्लो टू योर लीडर. Okay, I'm told Mr. Kamal Nopani is not able to hear me. I want to go back to Mr. Ajay Pandey. Dr. Ajay Pandey is with us. Dr. Pandey, I was asking you that why are you holding Nitish Kumar responsible for this? This was a case of police trying to disperse the crowds on a day of idle immersion, of course, where there were unduly large number of crowds, as we have seen in many of the election rallies. The police has a responsibility, but of course this is not to justify atrocities of the police, but where exactly you feel the chief minister himself is responsible? Why has your leader gone to the extent of even bringing in a casteist angle? Where does the caste angle come in this? Yeah, because you have asked a very right question, and I thank you for the question. Who is this lady officer? 4-year-old IPS officer given districts after districts. Why? Why political interference in the posting of the police superintendents? Just because she happens to be the daughter of his closest friend and a JDU leader? That he needs to explain. There are strictures against this lady officer by the Patna High Court, which was again ignored. Why she was always given the choicest posting very near to her father? So we have due rights to ask question that was this firing took place, what Mr. Manoj Tiwari was saying here, under some conspiracy on the behest of the JDU leader or the CM himself. Can you tell me, even his husband is a nearby district officer. The simple rule in election duty before posting this officer, that any officer related to the political party, in any political party, be in government or officers, are removed from the election duty. Why their names were forwarded to the election commissions? Why they were given charge? So it is just not Munger. We are questioning the very way the administration was being run by Mr. Nitish Kumar. And that is casteist remark is coming because he happens to be the particular caste of Nitish Kumar. So was it caste? Was it friendship?
On one hand, Mr. Kumar is busy in counting the numbers of sons and daughters of the fellow politician. The other hand, he is busy in recording what Chirag Paswan is doing on the election eve and how much sorrow he has for his father. And he has no time to run the administration. So tell me whom we will question. He is the Mukhia, he is the captain of the ship. Okay. So we are bound to question him. So you are holding the district police responsible for this. You are questioning the officer who has now been removed, by the way. But the question is that you were very much part of this government until a short while ago. So you would have probably the inside information why so-and-so was posted in a place on what basis. But I'll come back to you. Before that, I want to go across to Mr. Kamal Nupani, who's with us now. Nupani ji, आप क्या हमें ये बताएंगे कि इस तरह की जो घटना है ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है लॉ एंड ऑर्डर का. जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए युवाएं जो है बिहार में तरस रहे हैं, लेकिन अभी तो बेसिक सेफ्टी पे सवाल आ गया कि कोई एक फेस्टिवल हो उसमें आइडल इमर्शन में लोग पार्टिसिपेट करने जाए भी ऐसी घटना, एक 18 साल की लड़के की मौत हो जाती है. Nupani ji, आप सुन पा रहे हैं हमें? Okay, I think we've lost him again. So what I'm going to do is we're going to take another aspect of this story that we are tracking now, and this is with regards to the multiple versions that have come in on the firing incident. Viewers must recall that there was firing that happened. One young man lost his life with gunshot wounds, but no clarity on who fired those shots. There was one version that was floated by the police saying somebody from the crowds fired a shot. Now, Munger, of course, has a history of gun factories, and it is one of those places which is notorious with a reputation of having that kind of a gun culture. But having said that, now the CISF has come up with a clear report saying that the police had to fire shots in defense because the crowd turned rowdy. So contradictory versions. Protesters claim the youth died in police firing. Cops say that he was hit by a bullet fired by the protesting crowd. A CISF report, meanwhile, has clarified that local police fired in the air first to control the crowd of devotees who were pelting stones at them. The violent clashes erupted between the cops and the devotees on the day of idol immersion after Durga Puja on Monday, on the intervening night of Monday and Tuesday, leading to the death of a young man. So that is the overall circumstance. Let's listen in to some of the inputs that we have from the victim's family first. A young man was killed during idol immersion which was taking place here in Munger. We have his father right now with us, Mr. Amarnath Padar. Sir, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं कि उस दिन क्या हुआ था, आप कहाँ थे और कैसे आपको जानकारी मिली, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं. हम लोग बड़ी देवी का विसर्जन में वहाँ देखने गए हुए थे. रात ज़्यादा हो गई, दुर्गा जी उठ नहीं रही थी. हम, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, हम लोग एक साथ थे. मेरा बेटा और 3 दोस्त वहीं पे बड़ी दुर्गा के पास बच्चा लोग प्रसाद उरसाद चढ़ाना, इधर उधर करना, ये सब कर रहा था. घर आते हैं तो भगदड़ मच रही थी. भगदड़ मच रही थी. हम लोग अंदर जाने के लिए हुए ही कि मेरी बच्ची के मोबाइल पर उसका दोस्त फोन किया कि दीदी, अनुराग को कोई गोली मार दिया है, अनुराग को गोली मार दिया है, पुलिस का गोली चला, गोली मार दिया है, उसका सर फटा हुआ है. उसी समय देखे पुलिस, सेना का पुलिस था, वही गोली तरतराते हुए जा रही थी. आप कह रहे हैं आपने देखा, और ये बहुत मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है, बस इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर. पुलिस कहती है कि गोलियां ही नहीं चली, कैसे दिखता है? मतलब वायरल हुआ है, बहुत सा वीडियो वायरल हुआ है, सबके पास कुछ न कुछ है. यहाँ अगर आप 50 आदमी हैं तो 50 आदमी के पास कुछ न कुछ वीडियो वायरल है कि गोली चली है. यहाँ तक है कि मैगजीन भरते हुए दिखलाया गया है. आप कैसे कहते हैं कि गोली नहीं चली है? हम मेरा बच्चों को न्याय मिले, जो अपराधी है उसको सजा मिले.
All right, so let's, in fact, like I said, listen in also to the versions that have come in. It's important to put this in perspective. Listen in. दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम पे एक अप्रिय घटना हुई। कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई। रोड़ेबाजी में करीब 20 जवान घायल हुए हैं और एक थाना प्रभारी का पूरा सर फटा हुआ है। उसके बाद कुछ भीड़ की तरफ से कुछ फायरिंग हुई, जिसमें दुर्भाग्यपूर्णवश एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 6 लोग अभी घायल हैं। पूरे शहर में हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है। Okay, Komal Nupani ji is with us on the phone line. Nupani ji, आप शायद मेरे सवाल नहीं सुन पाए। मैं ये पूछ रही थी कि अगर एक फेस्टिवल में लोग आइडल इमर्शन के लिए जाते हैं, उसमें भी इस तरह के अगर एक माहौल बन जाता है तो ये क्या दर्शाता है? लॉ एंड ऑर्डर की क्या हाल है? और ये हो रहा है इलेक्शन के बीच में। This is going to affect the image of your Sushashan Babu. It's already taken a hit. Yes, ma'am. Yes. Okay. I repeat, प्लीज देखिए, ऐसा है, बिहार की जो समीकरण है, जो स्थितियां हैं, हर साल दुर्गा पूजा पे कहीं ना कहीं जो है ये व्यवस्थाएं होती हैं कि सरकार द्वारा पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है जुलूस को। चूंकि अब की बार कोरोना काल था और बिहार में चुनाव भी था, इसलिए सरकार ने, प्रशासन ने अपने सिस्टम के अनुसार वहाँ की व्यवस्था करने के लिए दिया। जिस समय जुलूस निकल रही थी उस समय जुलूस साइड से जो युवा लोग थे, जो भी लोग थे वहां, मैंने नहीं देखा, उन लोगों से कुछ पत्थर पुलिस वालों पर फेंके गए, जो जानकारी है। उसके बाद फिर बहुत, चूंकि प्रशासन है, डीएम है, आईपीएस, आईएएस, एसपी, आईएएस, इन लोगों को व्यवस्था के लिए छूट दी हो रखी है, अपने हिसाब से ये लोग कंट्रोल करें। इन्होंने प्रयास किया होगा, प्रयास में सफल नहीं होने की वजह से अगर एक साइड से फायरिंग यदि आती है, मैम, हम आप कोई भी रहेंगे, तो चूंकि पुलिस को कंट्रोल करना है, एक युवा की मृत्यु हो जाती है। अगर प्रयास में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिसी है, आपके पुलिस की जो रवैया है, उसमें तो कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। मौत कैसे हो सकती है किसी एक जवान की? किस तरह से पुलिस ने हैंडल किया सिचुएशन को? यस मैम, अगर सपोज करिए कि वहाँ पे अगर उनकी जगह प्रशासन का और कोई व्यक्ति होता, अगर ये डिसीजन नहीं लेता, उससे बड़ी घटना भी घट सकती थी, उससे भी बड़ी घटना हो सकती थी। क्योंकि जो स्टाफ पे, जो स्पॉट पे सीनियर पदाधिकारी, इसका मतलब यह है कि एक जो आइडल इमर्शन का जो इवेंट है उतना तक नहीं संभाला जा सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये तो हर साल होते हैं और ऐसे हमारे कई फेस्टिवल्स हैं। अगर आप हाथ खड़े कर दे कि कभी भी हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होगा, उसमें लोग जमा होंगे, अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम फायरिंग करेंगे, उसमें एक की जान चली गई तो क्या हुआ? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं मुझसे? हम नहीं कहना चाह रहे हैं। सिचुएशन पे एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय लेता है, न कि सरकार निर्णय लेती है। वो एडमिनिस्ट्रेशन का निर्णय था स्पॉट के ऊपर कि सिचुएशन को कैसे। ये कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं था, ये एक त्योहार के दौरान हुआ, ये एक आइडल इमर्शन के दौरान हुआ। आप इससे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते जी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का काम ही ये है कि इस तरह के जब त्योहार होते हैं तो लोगों को वो किस तरह से स्ट्रीमलाइन करे, क्राउड मैनेजमेंट किस तरह से करे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि इट इज़ नॉट फेयर टू प्ले पॉलिटिक्स ओवर द डेथ ऑफ अ यंग मैन, which is of course happening at this point of time. Mr. Ajay Pandey, one last word from you on this, because like I said, is it fair that the kind of rhetoric that we have seen over the death of a young man at a time like this, it has come at a very opportune moment for you? But on a larger point, you are attacking Nitish Kumar on this issue. You are supporting the BJP. BJP is supporting Nitish Kumar. It seems that your strategy has just simply confused and confounded the voter. How will attacking Nitish Kumar help you politically in this? It's not about political. I told you very categorically. We are questioning the very policies of the Nitish Kumar government, and it is just not the Munger. Why fire shots were there in the Far West Gum when the people of Bihar were asking for simple road? This is not first incident. They are used to doing this. Why there were lathi charge on the people demanding job, teachers demanding salary? We have been all raising these issues.
what you will say of this government who has a policy of giving a government job if a Dalit is killed? That is the official policy of this very government. So they believe in killing and they believe in paying money, and that they wanted to do in Munger. And you looked at just now how this lady officer was lying on camera. You seen what the BJP is... you are leveling some very serious charges. Let me take a rebuttal from Kamal Nopani. कमल नोपानी जी, क्या कहना है आपका इस इनके रिस्पांस में जो आपकी सरकार को दोषी ठहराते हैं इस तरह की घटना के लिए? I don't think I can hear Mr. Nopani out there. Let's in fact also now listen into an important reaction that we have from the Munger DIG. Just a day after a police station was vandalized by the protesters, Munger Range DIG has said that the situation in the city is normal and the action will be taken against the accused. Let's quickly listen in to what he had to say. अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है. हमारा बल भी है, रोड्स पे है, सड़कों पे है, फ्लैग मार्च निकली है और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. और जो लोग कल उपद्रव किए उनको चिन्हित किया जाएगा. जो भी उसमें नियमबद्ध कार्रवाई है वो की जाएगी. We are currently standing outside a police station here in Munger, and what you see right besides me is the last reminiscence of the violent protests that took place here yesterday. These are the municipal corporation of personnel who are trying to clear the last reminiscence. You can try and see how badly the police station itself was vandalized, and this was due to the fact that the people were really angry against the police for taking such a violent action against the protesters who were merely taking out an idol procession for immersion. Now the protesters and the worshippers have very clearly come out and said that, you know, it was the administration which was at fault and the police fired openly on the worshippers. The worshippers have gone on to say further that the administration all of a sudden took violent measures to contain the mob which erupted due to the sheer fact that the administration would not let them complete their religious procession which was going on in Munger. Now, even since 5 days, the only action that has been taken so far is the suspension, the removal, I beg your pardon, of the SP and DM. That too came in after the Election Commission's order. Since then, a new appointment has also been done of the SP and DM, but the people are asking for more. The family members of Anurag Podar, we spoke to them as well. They are very clear that they want a CBI inquiry. They do not trust the administration here. They say that it's the same people who fired at their son would now be investigating the same matter as well. कमल नोपानी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, मैं आपसे एक क्विक रिएक्शन चाहती हूँ. जो ऑपोजिशन के नेताओं ने कहा, फॉर इंस्टेंस शिवसेना ने तो ये कहा है कि this is an attack on Hindutva. It has happened on the occasion of an Hindu festival. This entire incident has robbed you out of that Jungle Raj argument that you keep making against the RJD, because what has happened under the BJP JDU rule in Munger is nothing short of Jungle Raj from what we can see. But your response to all the leaders of the opposition, including Congress, who is demanding immediate resignation of Nitish Kumar, and the others in LGP, who is drawing references to General Dyer and Jallianwala Bagh. ऐसा है, एकदम ठीक है. चुनाव साल चल रहा है, बिहार में चुनाव हो रहे हैं. ऐसी स्थिति में देश की कोई भी राज्य की राजनीतिक पार्टियां अगर वो आक्षेप लगाती हैं किसी भी राज्य पे, तो वो गलत नहीं है. वो उनका स्वभाव है, वो उनकी प्रवृत्ति है. विकास वो देख नहीं सकते. और घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये. हम इसकी घोर निंदा करते हैं. लेकिन आप एक चीज देखो, 2 दिन के अंदर डीएम, एसपी सभी के तुरंत चुनाव आयोग के निर्णय से तबादले हुए हैं. क्योंकि राज्य सरकार नहीं कर सकती चुनाव में तबादला. इसके बाद जो डीआईजी है वहाँ बहुत इफिशिएंट ऑफिसर है, बिहार के जाने माने ऑफिसर हैं. उन्होंने कल से लेके आज 12 बजे तक स्थिति को पूरा कंट्रोल में कर लिया है. फ्लैग मार्च हो रहा है, घटनाएं हो रही है. घटना किसी भी स्टेट में इस तरह की अचानक घटनाएं होती हैं. इसमें सरकार का हाथ नहीं होता है. इसमें चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को हैंडल करता है. इसको अब घटनाएं होती है मत कहिए, क्योंकि एक 18 साल के युवा ने अपनी जान गंवा दी है इस घटना में. ये कोई मामूली बात नहीं है. एक परिवार ने अपना एक बेटा खोया है. तो इस पे आई वुड हैव एक्सपेक्टेड यू टू हैव सम एम्पैथी टुवर्ड्स द फैक्ट दैट दिस इलेक्शन
should not be one of those where you see young people losing their lives. Whatever the circumstances that you're trying to justify does not justify police excess and atrocity. We have seen it a number of times, and this is of course symptomatic of Jungle Raj. Whether it is the JDU or the RJD or any other party in power, law and order is the basic responsibility where the parties have failed the residents. Thanks for joining us, Mr. Ajay Pandey, and also Mr. Kamal Nopani, for giving us your views. We'll take a short break now. News and updates continue on the other side. Stay with us.